All right, I'm starting now. Chapter number 12, Thermodynamics. Thermodynamics is the combination of two words, thermo plus dynamics, heat and motion. So this chapter deals with the heat engines, in fact, which produces the kinetic energy with the help of heat. Have you seen the heat engine? Heat engine is fitted in the automobile, in two-wheelers, car, ship, train, aeroplane, power station, thermal power stations. Heat engines are used, which are used to convert the heat energy into the kinetic energy or into the motion. So that's what is all about thermodynamics. In this, we are going to see the different processes which are used in the heat engines, or including refrigerator also. Refrigerator is also the part of this chapter only. We are going to see the first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and after that, zeroth law of thermodynamics, which was developed at the later on after the second law in place of giving third. It was so simple. Zeroth law was so simple, so they didn't give the name third law. It was given zeroth law of thermodynamics. It is very simple. So let's see. Here some processes will be various processes we are going to see, which will be described by the variables. We call it microscopic variables like pressure, volume, temperature, mass, enthalpy. Enthalpy is the total heat content of the system, and entropy, it is a measure of the disorderness of the system. These two terms you are going to see detail in the chemistry, but we are going to discuss pressure, volume, temperature, mass, etc. in the thermodynamic processes. All right. So ideal gas equation, first we have to see the ideal gas equation, because with the help of these, we are going to discuss the various thermodynamic processes. So ideal gas equation is, suppose we have the gas inside the cylinder, which is sealed from the piston here. ये piston है यहाँ पे अंदर गैस है. तो इसका जो pressure and volume, it means thermodynamic variables, pressure, volume, and temperature, and number of gas particles that will indicate the number of moles, in fact. So relation is PV is equal to nRT. Okay. In other words, if we increase the pressure and keep the volume constant, temperature will go up, or other way around. If we increase the temperature and if we keep the pressure constant, volume will go up, or if we increase the temperature, both may go up. So these three variables are there, P, V, and T. They are related like this, and where P is the pressure. Which pressure we talk about? कौन से pressure की बात करते हैं? दो pressure हमने सीखे थे fluid में. One was the absolute pressure. Another was what? Another क्या था? What was the another pressure? दूसरा कौन सा था? Gauge pressure it was, है ना? Gauge pressure. So gauge pressure is the pressure above the atmospheric pressure, and absolute pressure is the total pressure, including of atmospheric pressure. So here it is a total pressure we talk about, which will be absolute pressure. Zero से कितना ऊपर, vacuum से, pressure above the vacuum is called absolute pressure. And because here is the absolute temperature. T क्या होगा? Absolute temperature है Kelvin में. The pressure should also be there, absolute pressure. And V is the volume, N is the number of moles, and R is the universal gas constant. Its value is 8.314. Can you read it? Unit कैसे आएगी यहाँ से? R की number of moles and T को denominator में भेज दीजिए. P into V is nothing but a work done also, इसलिए उसका juice हो जाता है P into V का, per mole per Kelvin. Unit can be found out from this relation. Now number of moles कैसे निकालते हैं? केमिस्ट्री में आपने काफी डिटेल में पढ़ा होगा. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, mass of the gas or mass of the substance divided by molar mass. 1 mole का कितना mass है? That one.
or if you know the number of gas particles, इसको हम symbol कैसे ले सकते हैं? Mass of the gas can be indicated, mass of the substance can be indicated by m, molar mass can be indicated by m naught. Are you there? ठीक है? Yes. Or otherwise, if you know the number of gas particles, then also you can find out number of gas particles. Gas particles. Number of gas particles, which will be n divided by what? Avogadro's number, जो कांस्टेंट होता है Na, है ना? अगर हम टोटल गैस पार्टिकल्स हमें पता लग जाए तो हम एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल इज पर्टिकुलर वन डेफिनेट क्वांटिटी, है ना, and which can be obtained by this relation or this relation. When we exhale or inhale, when we take the deep breath, we generally inhale or exhale 1 mole of the air, you know, 1 mole of air can be taken when you take the deep breath in that. Therefore, in our room, there are hundreds of thousands of number of moles of the gas particles. Number of moles will be many hundred times, hein? Because as I told you, when we take the deep breath, so 1 mole gas particles can be going in or going out, which is this quite a big number, है ना? 1 mole में कितने number होंगे? 6 into 10 to the power 26 billions of gas particles, you know. All right. So some more points we'll see in the next chapter. Actually, में next chapter में हम इसमें थोड़ा और देख सकते हैं इसके PV is equal to NRT के बारे में. But this much here, and further we'll see in the last chapter जो हम करेंगे kinetic theory of gases में. Okay, any doubt here so far? Ideal gas equation. No problem. No, sir. Okay, thermodynamic system. As we are, if we take the gas particles in the cylinder, so it is a thermodynamic system means it is a collection of gas particles. Gas will be called thermodynamic system, whereas ये जो cylinder है, piston also, and outside air also, outside surrounding. So these piston, cylinder, etc. They will be the thermodynamic surrounding, and gas will be the system. जब भी हम बोलेंगे system means it is a collection of large number of gas particles, means gas, that is a system, thermodynamic system, and piston and cylinder is called surrounding. Clear? Terms you should remember. Gas means only, system means only gas. System, thermodynamic system means we are talking about only gas, not the piston, not the cylinder. Piston and cylinders are the surroundings. Clear? So terms should be known to you. These two terms will again and again repeat. You should know the meaning of that. Okay? Moving further. Okay, you want to see it again? British were very strong in thermodynamics, you know, they made the shapes and all many centuries before, therefore they could go all over the world and could rule on the weaker countries. They were very, very strong in the thermodynamics, British. Moving further, thermal equilibrium means what? If system of two gases will be in thermal equilibrium if temperature of two system of gases are equal. Thermal equilibrium means temperatures अगर equal है उनके, तो we call it thermal equilibrium. है ना? और mechanical equilibrium क्या होती है? What is the mechanical equilibrium? That deals with the forces. Mechanical equilibrium जब हम बोलेंगे, तो forces are equal and net force is zero in the system. है ना? यहाँ पे net temperature zero नहीं बोलेंगे. We don't call it net temperature zero. Thermal mechanical equilibrium में we call it
net force 0, net torque 0. But here temperatures are equal. No temperature difference. वहां पे हम बोल सकते हैं no force difference. If two forces are applied, both are equal and opposite, net force is 0. So thermal equilibrium means net temperature. I mean, two gases will be in thermal equilibrium or three gases will be in thermal equilibrium if they have the same temperature. Okay? Now, there are two terms you will come across. Diathermic wall. Diathermic means conducting wall. Conducting Sir? wall through which, yes. So can you scroll up? Yes, sir. Okay, this you want to see this? Yes, sir. Temperature equals, and यहाँ पे मैं temperature of two gases are equal. Now, diathermy is conducting wall through which heat can be conducted. Now, I'm not talking about the electricity. Generally, good conductors of electricity are also good conductor of heat generally, but it may not be true always. So what we are talking about conducting wall means heat can be conducted. That particular wall is called, a particular surface is called diathermic in the terminology of thermodynamics. ठीक है? और non-conducting wall को क्या बोलेंगे? Adiabatic wall. You know adiabatic process in which no transfer of the heat takes place is called adiabatic process. On that terms, we can say no heat conducted through the wall will be called adiabatic wall. Adiabatic surface we can call it. Now, zeroth law of thermodynamics is what? Suppose we have the three gases. एक गैस A है, B है, सिस्टम बोल सकते हैं उसको C. This is the diathermic wall and this is the adiabatic wall. So heat can go like this, or it can come like this. It cannot come directly. So now suppose gas A and gas B, system A and system B are in thermal equilibrium with the third system C, then they will also be in thermal equilibrium with each other. अगर इसका temperature इसके साथ same है, so they will have the equal temperature with them also, thermal equilibrium with them also. That's what is the zeroth law. It is very, very basic law. Therefore, it was not given the third law of thermodynamics. It was defined, or it was explained at the end of the second law. So in place of giving third law, they have named it zeroth law. Zeroth law of thermodynamics, which states that two systems in thermal equilibrium with the third system separately are in thermal equilibrium with each other also. So it is very simple one. You can remember easily. तो यहाँ से हीट कंडक्ट हो सकती है इसमें, यहाँ से कंडक्ट नहीं हो रही, बट यहाँ से कंडक्ट होकर इधर आ सकती है, इधर से इधर जा सकती है. Directly they are not in contact. Indirectly they are in contact with the sea, with each other through the sea. ठीक है. This is the zeroth law, which is based on the thermal equilibrium, which in fact is the temperature dependent. And what about the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics deals with the energy. It is based on the energy conservation. So we'll see the first law. Before that, we can see the how do we define the work, how do we define the internal energy, how do we define the some more thermodynamic variables. Let's see first one that, then we'll see the first law of thermodynamics. यहाँ तक okay है, no problem. No response. Are you there? Yes, sir. Okay. Internal energy of the gas or internal energy of the system. Internal energy है ना. तो internal energy of the gas is nothing but a energy of the gas or energy of the system due to the kinetic energy of gas particles. उसके जो total gas particles हैं, उनके पास कितनी kinetic energy है, because they are always in random motion. So how much energy they have, all energy added will be equal to internal energy. तो kinetic energy कितने type की होती है? It can be translation motion, it can be rotational motion, it can be vibrational motion. All type of energies added together will be the internal energy. The energy of the gas particles is due to the kinetic and potential. In fact, potential energy
आइडियल गैस में 0 होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर टेकन, बट यहाँ पे लिखा है if at all they have, potential energy will also be taken. Kinetic energy includes translational, rotational, vibration motion of the gas particle, but doesn't include kinetic energy of the cylinder containing the gas particle. अगर सिलेंडर कहीं मूव कर रहा है, सिलेंडर सपोज कहीं it is gas is filled in the tanker and tanker is moving along with the train, तो वो kinetic energy ऐड नहीं होगी. अंदर जो गैस पार्टिकल्स है, they are moving left, right, up, down, that energy is the part of the internal energy, not the kinetic energy of the cylinder. It is excluded. यहाँ पे लिखा है not included. ठीक है, तो it depends upon the temperature of the system only. ये केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. ऑफ कोर्स नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स विल आल्सो बी देयर. जो भी गैस पार्टिकल्स है, इफ यू lower the temperature, kinetic, I mean internal energy will drop. If you increase the temperature, internal energy will increase. So temperature dependent, not the process dependent. आप कैसे temperature change कर रहे हैं, that is immaterial. It is the state function we call it, है ना. एक temperature से दूसरे temperature पे गए, change of energy will depend upon the temperature difference. That's all. How do you go? It is none of their business. Particles, जो gas particles, don't bother. How do you take them to the different temperature? They are not bothered. So it depends on the temperature of the system only. Or change of internal energy depends upon initial and final state of the system, not on the process followed. Therefore, it is called state function. Initial state क्या है, उसकी final state क्या है, initial कितना temperature है, final कितना temperature है. That's all. What is the process followed to take them to the other state is immaterial. ठीक है. और अगर हमने if internal energy increases, delta internal energy is indicated by U, so change will be indicated by delta U. If it goes up, it will be positive. If internal energy decreases, delta U will be negative. Common sense. कोई mass में भी if some quantity goes up, तो delta कोई quantity बढ़ती है, तो delta x को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव. अगर घट जाती है कोई क्वांटिटी तो माइनस लिखते हैं. क्यों? बिकॉज डेल्टा एक्स विल बी व्हाट, x2 minus x1. If x2 is less than x1, x2 is the final value, so delta x will be minus. तो यहाँ भी if decrease, if change of internal energy is minus means decreasing means minus हो गई, decrease means minus हो गई, simple logic. ठीक है. और बढ़ गई, if increase, if internal energy increases, change of internal energy is taken positive. Anything else you want to know in this internal energy? You may be interested to know how do we calculate, what is the formula. There are 3 formulas for internal energy or change of internal energy. We can use the 3 formulas which will be coming one by one. If I tell you now, you will not understand that. ठीक है, तो आगे different topics में आएंगे. We can then we will write there change of internal energy निकालने के लिए. ठीक है. In your textbook it is shown the diagram there. Suppose ये सिलेंडर है, रेस्ट पर है, इसके गैस पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी 100 जूल है, बट इफ इट इज मूविंग, सिलेंडर इज मूविंग, देन आल्सो 100 joules, provided you don't change the temperature. So motion, kinetic energy of motion of the cylinder is not the part of internal energy. Already we have written. Let's see what is written here. Internal energy U of the gas is sum of the kinetic and potential energies of its molecules when the box is at rest. Kinetic energy due to the various types of the motion, translation, rotation, vibration, already we mentioned, is to be included in U. If the same box is moving as a whole with some velocity, the kinetic energy of box is not to be included in internal energy. But ideal gases में क्या होता है, potential energy is negligible. So whole energy is due to the kinetic motion of gas particles. Okay, these are all points I will already explained you here. So if you are interested, you can just see all thing together. ठीक है, formulas we'll see later on. तो ये हो गया आपका internal energy.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन यहाँ पे 100 जूल मीन्स जितनी पहले है उतनी रहेगी, नो चेंज, जस्ट करने वाला। नाउ दिस पॉइंट आल्सो, हाउ टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। सपोज आपको बोला जाए इंटरनल एनर्जी बढ़ाओ, तो देयर आर टू वेज, आइदर यू कैन हीट इट और यू कैन डू सम वर्क। उसके ऊपर कुछ वर्क कीजिए, जैसे पिस्टन को प्रेस कीजिए, यहाँ पर, यहाँ से पिस्टन को प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा गैस। जो आप वर्क करेंगे पिस्टन के ऊपर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क डन विल बी इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। तो you can press the piston inward, or you can just heat it. If you don't want to move the piston, you heat it. So you can change the internal energy, heating or doing work, etc. ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इंक्लूडेड होता है। तो वर्क डन भी पहले देख लेते, देन वी सी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Work done already we have seen in the chapter number 5, work for energy. Same definition here also, work done is equal to force into displacement. Suppose ये आपने सिलेंडर लिया यहाँ पर, और यहाँ पे पिस्टन है, बाद में उसको if piston goes out due to some pressure or some heat energy, it goes out. So work done, there is some force due to pressure. So work done is equal to force into displacement. But we know force is equal to pressure into area of the piston. ये जो piston है उसका area लेंगे, तो P will be the pressure of the gas inside, pressure into area, और ये displacement हो गया dx. So force into displacement, force can be written product of pressure and area. But area into displacement is what? Change in volume. यहाँ से यहाँ तक देखो, can you see here? It has gone, ये इतना volume change हो गया. Area into dx is called change of volume. So work done is pressure into change of volume. If variable pressure is there like this, in case of variable pressure, then how to find out the work done? अगर pressure variable है तब कैसे निकालेंगे? बोलिए, pressure is variable, how to find out the work done? बोलो, work done can be found out by integration. P dV. dV will be the small change in the volume and P will be the corresponding pressure at that moment. और कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है? V1 to V2. लिमिट क्या रहेगी? V1 से लेकर V2 तक. Which always, as I told you, integration is nothing but area. Under PV diagram, कौन सा एरिया लेंगे? जिधर वॉल्यूम है उस तरफ का, ये वाला एरिया, इधर का नहीं लेना। आर यू देयर? इधर का वॉल्यूम नहीं लेना है, वॉल्यूम इधर का एरिया नहीं लेना प्रेशर के साथ, वॉल्यूम एक्सिस के साथ, बिकॉज डीवी वॉल्यूम इज चेंजिंग। यहाँ पे हमने लिमिट P1 to V2 लगाई है, तो एरिया शुड कम फ्रॉम दिस साइड। तो ऑलवेज सी केयरफुली, प्रेशर इज गिवन हियर, वॉल्यूम इज गिवन हियर, so you have to take this area if you are able to find out the area. अगर एरिया नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, then you have to do the integration. There is no chance to escape from integration. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो, प्रेशर V2 को क्या लिख सकते हैं? V2 डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं? V2 minus V1. अगर प्रेशर ऐसा कांस्टेंट रहता है ऐसा, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. विदाउट इंटीग्रेशन वी कैन डू इट, but pressure is increasing like this, so you have to do the integration or you have to get the area under the PV diagram anyhow. ठीक है, तो प्रेशर निकालने के लिए क्या क्या, आई मीन वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर ऑफ द गैस इज रिक्वायर्ड एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड. so that will give you the work done by the gas or work done on the gas. अभी यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ सकती है. वर्क डन by the gas means work done by the system. यहाँ पे see very carefully, work done by the gas will be what? यहाँ पे देखो, बहुत केयरफुली फार्मूला फॉलो करो, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव you have to remember very carefully. Work done by gas,
Do we have the time? Yes, we have. यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ first point. Okay, already I have written. Let me just save the time. And यहाँ पे देखो diagram बना लगे. We can save the time. देखो. Yeah, you see, work done by the system on the surrounding. System कौन है? Gas है. Work done by the gas. इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ. Just okay. Can you see it now properly? Can you see it? देखो. Work done. Are you there? Work done by the Yes, sir. system, that is gas, on the surrounding is positive. क्या है? Positive. क्यों positive है देखते हैं. Because जब गैस पिस्टन को पुश करेगी तो पिस्टन बाहर जाएगा यहाँ पर. तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर, इनिशियल वॉल्यूम इज स्मॉलर. तो फार्मूला क्या है वर्क डन का? थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, V2 माइनस V1. ये फार्मूला है. तो प्रेशर कैन नेवर बी नेगेटिव. प्रेशर कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं. वैक्यूम इज द जीरो प्रेशर, दैट्स ऑल. उसके बाद नेगेटिव नहीं होता. तो नाउ V2 is greater here. You can see system is pushing the piston out. So V2 is greater. This term is also positive. This term is also positive. So work done by the system. Work done by the system onto the surrounding will be always positive. है ना? सिस्टम को ही वर्क करना चाहिए ना, गैस को वर्क करना चाहिए. दैट्स व्हाट इज द दैट्स व्हाट इज द रोल ऑफ द हीट इंजन. हीट इंजन का रोल क्या भाई? गैस में अंदर बहुत हाई प्रेशर होना चाहिए. इट विल पुश द पिस्टन आउटवर्ड. दैट पिस्टन विल बी अप्लाइंग द फोर्स ऑन द शाफ्ट इनसाइड. ट्रांसमिशन सिस्टम पे फोर्स लगाएगा. दैट ट्रांसमिशन सिस्टम विल रोल द व्हील एंड व्हील विल मूव फॉरवर्ड. So work done by the system should be there and that should be positive. तो यहाँ पे बहुत केयरफुली फार्मूले से भी हमें दिख रहा है V2 greater than V1. तो एक्सपेंशन में क्या होता है? वर्क डन इज पॉजिटिव. एक्सपेंशन में V2 is greater and work done is positive. तो जब गैस एक्सपेंड होती है, पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, तो वर्क इज पॉजिटिव. ठीक है यहाँ तक? सपोज यू आर पुशिंग द पिस्टन इनवर्ड. आपने अभी जनरली क्या होता है, ये क्या होता है कि ये जब कंबशन होता है सिलेंडर के अंदर, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. गैस इज पुशिंग द पिस्टन with a very high force outward. Piston goes out, it makes the torque rotates the wheel. That's what is happening. But piston is to be brought back for the next process. Next process के लिए वापस लाना है. तो due to inertia, surrounding उसके ऊपर काम करती है, inertia से वो वापस भी आता है. You are not going to push it inward, but थोड़ी देर के लिए assume कर लो कि आप push कर रहे हो. उसको थोड़ा समझने के लिए now you can assume that you are pushing or some other source is pushing. Surrounding is pushing the piston inward. अभी यहाँ से अंदर push कर रहा है उसको. तो surrounding is pushing. तो work done on the system by the surrounding. Suppose आपने इसको piston को हाथ से पकड़ा, अंदर push कर दिया, है ना? तो क्या होगा? Final volume is less, initial volume is more. तो seeing this formula, ये formula दिख रहा है ऊपर आपको, मैंने राउंड किया. तो V2 is less. When V2 is less, this thing will be minus. Pressure is always positive. So burden will be negative. If somebody is compressing the system, compression में क्या हो रहा है? Final volume goes down, V2 goes down. Whereas change of volume is delta V is V2 minus V1. तो ये term negative हो जाएगा. Will be negative. Pressure is always positive. ये फार्मूला मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, उधर गैप का मैं आई एम राइटिंग इन बिटवीन, बीच में लिख रहा हूँ. चलिए सी V2 is the deciding factor. If V2 increases, work done is positive. That is expansion of the gas, work done by the gas on the surrounding. Vice versa. Got it? Compression में work done negative आएगा हमेशा. जब volume घट रहा है, is negative because work is done because of the formula. We can say work is done by the surrounding on the system. तो ये आपको याद रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं. ये अभी आपको न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम लोग, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है. इंटर एनर्जी के लिए देयर वाज नो बिग इशू. इंटर एनर्जी के लिए तो चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटर एनर्जी पॉजिटिव, डिक्रीज ऑफ इंटर एनर्जी नेगेटिव. बट दिस इज स्लाइटली
डिफरेंट। हम ऐसा नहीं बोल सकते इंक्रीज ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव, ऐसा नहीं बोल सकते ना। वर्क डन बाय द गैस बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज पॉजिटिव। बाय में पॉजिटिव आएगा, ऑन में नेगेटिव आएगा। एन में नेगेटिव और ऑन में एन है और नेगेटिव में भी एन होता है। So you can just remember, on is there, word on is there, work done on the system is negative. Clear? Can you remember with this? यहाँ पर भी नेगेटिव है, नेगेटिव स्टार्ट्स with minus and on में भी n है। Can you remember this sign convention? Why I am telling you? Because it's different in the chemistry. Chemistry में opposite है इसका। Chemistry में they are not interested in the piston and all. Are you there? Yes, sir. Chemistry में piston and completion, and they are not interested in. They are interested in the process. Therefore, sign convention is different there. उल्टा है इसका, है ना, केमिस्ट्री में उल्टा साइन कन्वेंशन में। बट यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द वी आर टॉकिंग विद द फार्मूला। फार्मूले से हम जस्टिफाई कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड विद द डायग्राम आल्सो। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बोथ पुट टुगेदर फॉर्म द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लेट्स सी नाउ। ओके, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं वर्क डन का पहले थोड़ा। देखो, सपोज अभी हमने देखा था कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द वर्क डन, है ना। तो सपोज रिफर द साइक्लिक प्रोसेस एंड फाइंड द नेट वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो नेट वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस मींस ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो जो लूप का एरिया निकालेंगे दैट विल गिव यू द नेट वर्क। ये जो लूप बना रहा है साइक्लिक प्रोसेस है, तो एरिया ऑफ द लूप विल गिव अस द वर्क डन, है ना। यहाँ पे मैं लिखूं हिंट में क्या है, ये क्या दिया है, फिर इसको हटा दो। हिंट में एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ cyclic means closed loop, area of the closed loop, cyclic loop gives net work done। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम गोज अप, पॉजिटिव वर्क होगा। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, नेगेटिव वर्क होगा। यहाँ पे नो चेंज इन द वॉल्यूम, जीरो वर्क होगा। तो ये सब पूरा मिला के जो एरिया होता है ना, दैट गिव्स यू द नेट वर्क डन। तो एरिया निकाल लो तो पूरा लूप का, तो पूरा कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पूरा एरिया बन जाता है। एरिया इज द वर्क डन, है ना। तो वर्क डन इज, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। कैन यू रीड इट? बेस इनटू हाइट लिखा है यहाँ पर। यस सर। बेस कितना है? दिस मच इज द बेस। कितनी वैल्यू होगी? वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो वी डोंट हैव टू चेंज इट नाउ। कितना हो गया ये? 5 - 2, तो ये 3 आ जाएगा। दिस विल बी 3, बेस विल बी 3। और ये हाइट कितनी है? 600 - 300, 300 ऐसा यूनिट है क्या? यस, ऐसा यूनिट, वी डोंट हैव टू चेंज इट। तो इट कम्स टू बी 450 जूल्स। इसमें इफ यू वांट टू, अगर आपको ब्रेक करके देखना है, यहाँ पे तो जीरो वर्क डन होगा, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। यहाँ पर कितना होगा टोटल? इतना आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग हियर, नेगेटिव वर्क होगा, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बचा कितना? ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द क्लोज लूप विल गिव यू द नेट वर्क डन, इट कम्स टू बी 450। नाउ ये एरो देख रहे हैं, एरो कैसे होनी चाहिए? क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वर्क होता है, अगर एरो एंटी क्लॉकवाइज कर दिए थिंग्स विल रिवर्स। तो रिपीट, इफ एरोज इन द प्रोसेस आर रिवर्स, तो माइनस लिखना, उसमें आप वॉल्यूम निकाल लो, एरिया निकाल लो, थिंग्स विल बी, इफ एरोज आर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन विल बी नेगेटिव, ऐसा लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ, आपको कुछ करना नहीं है। इफ एरोज आर anti-clockwise, ACW, then work done will be negative.
क्यों नेगेटिव होगा? बिकॉज देखो ये एंटी क्लॉकवाइज में ये तो ऐसे जाएगा, तो पॉजिटिव वर्क तो कम होगा, इतना ही होगा, और ये एरो ऐसे जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे इतना है, तो नेगेटिव वर्क ज्यादा हो जाएगा। और ये वर्टिकल एरो, इसमें तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, 2 ही रह रहा है थ्रू आउट, इसमें वर्क डन नहीं होगा। तो एरो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव वर्क इज मोर, नेट वर्क डन जो लूप का होगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे एरो पॉजिटिव है, तो देयर इज वी आर नॉट मेंशन दिस, वी आर जस्ट केप्ट इट पॉजिटिव। अगर एरो नेगेटिव कर दो तो माइनस आ जाएगा, सेम अमाउंट। एरिया तो निकालना ही है आपको, एरो पॉजिटिव है तो प्लस लिखो, एरो नेगेटिव है तो माइनस लिखो। तो ये आपके लिए इजी मेथड, 1 by 1 प्रोसेस निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगता है। अगर यह वॉल्यूम सीसी होता तो 10⁻³ हो जाता है। क्यूबिक सेंटीमीटर को, नहीं सॉरी लीटर होता तो, लीटर को, चलो लीटर वाला पॉइंट बाद में देखेंगे, कहीं पे आएगा वो, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर SI यूनिट, we'll see later on. So I think just time is running out. ये क्वेश्चन based on this point, can we do this question? PV diagram is shown. PV diagram here shows 6 curved paths connected by vertical paths that can be followed by the gas. Which are the 2 curved paths showed by the part of the closed cycle? Those curved paths plus connected vertical lines. इस तरह से ऐसा कुछ है। तो क्या था? Which of the 2 curved paths showed by the part of the closed cycle, if the net work done by the gas during the cycle is to be at its maximum positive value, maximum positive value में maximum area होना चाहिए। maximum area कौन से पाथ के लिए बोलो? maximum positive वर्क के लिए एक तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, एरो शुड बी क्लॉकवाइज, और मैक्सिमम एरिया, 2 कंडीशन। तो कौन से 2 पाथ में एरोस क्लॉकवाइज है और मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है? इसमें तो एरो एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो नो, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिव वर्क। इसमें देखो ये बना सकता है नीचे वाले किसी पाथ के साथ क्लॉकवाइज, इसके साथ बना रहा है क्लॉकवाइज, बट एरिया कम है। लेट्स सी इसके साथ भी बना रहा है क्या? यस, क्लॉकवाइज लूप, क्लॉकवाइज बनना है कि नहीं? देखो, और तीसरे वाले के साथ, नीचे वाले के साथ बना रहा है क्या? नहीं, नीचे वाले में ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, तो ये इट इज नॉट मेकिंग द लूप, फुल लूप इसके साथ बना रहा है, ये बिगर लूप बना रहा है और क्लॉकवाइज